Today we will learn what is the use effect. So basically, use effect is a React hook which will provide us some functionality so that in a side effect we can change our values in a code or in a random. So in a DOM. So if we want to update something in a DOM after some time, so for that cases we use effect. So first our entire DOM will render, then the use effect will call. So in a very minimum example, I am showing you when use effect will run. Okay, so I am doing just simple logs. So over here, start and end, and I am inside the use effect. I am calling the inside. So if I run this code and see in a browser, so as you can see over here, first start print, after that end print, and the inside also will print. Okay, so what's happening? So first entire DOM will render. After that, once the DOM is rendered, then whatever we write inside a use effect, that will call. Okay, so use effect gives us a three to four functionalities. So we will see one by one. So first is a use effect give us a pass to take a two argument. Okay, one is a call of function, another one a dependency array. So we are going to see what is the call of function. So once entire DOM is rendered and use effect call, so it will take a first argument is a call of function. So inside this function, if we want to uh, call a API or update a data something, so everything that we can do from over here. So like this is our function, and over here we can call this function. Okay, so if we call this function, then we will get a data. Okay, and suppose if I call this function inside this function not from here outside of the use effect, but I am calling the function inside the use effect. So use effect is only call this API on a single time. So if I go here, like if I log something over here is network error showing because this is a temp API. So it will call one time. But if I don't call this API from use effect inside the use effect, I am calling it from outside. So what will happen in React? It will automatically re-render too many times. So then at that case, what happened? Mm, our React will give a error over there. Just wait. Oh, so we are just calling API. If we update any state over here, like in this particular in React, if we update any state, then the DOM is again re-rendered. This component will again re-render. So over here, if we are doing, so we will get error too many re-renders. But if we call the same thing inside this use effect, then it only call this API single time. Okay, this. So we are not getting that error. Okay, now what happened? But in this case as well, if any state will change, then the entire DOM will render, and then this API will again call. So suppose if we have more state, then if any state will change, then again then again this API will call, and then again will the API will call, and then again it's re-rendered, then again call, again re-render. So to put okay, so this is the callback function used. Uh, so this callback function is doing this. So if we want to protect that, so like any of the state is changed, but we don't want to call this API again from useEffect. So for that, useEffect is giving us a second uh, argument
taking to second argument, which is a dependency array. So in this dependency array, if we uh, leave it here empty array, so it only call this API one time after the first render. But if you pass anything like any state over here, like if I pass this state over here, okay, then what will happen? Like at what if this state is updated, then this API again call. So in this case as well, if I not crashing our application. So what happened? Because we are calling this API and updating the same state, so again this API will call again this API. To protect this, we can simply manage these kind of scenario while doing updating the state single time and making it empty. What if you want to like update a data, so you want to fetch data again once the update uh, will happen. So state update, and over here as well we can do state update. So if I update this data, if I pass this state inside a dependency, so once this will change, then only that will call. So in this case, first after entire DOM render, that time this call, and once this state update will update, then only this call. सो जैसे यूज इफेक्ट एक और हमको एक्स्ट्रा फंक्शन या फीचर देता है जिसको हम क्लीनअप फंक्शन बोलते हैं। तो यूज इफेक्ट का जो क्लीनअप फंक्शन है वो जो नॉर्मल कॉलबैक फंक्शन होता है यूज इफेक्ट के लाइक दिस। तो इसके अंदर हम जब रिटर्न एक फंक्शन करते हैं तो एक क्लीनअप फंक्शन होता है। क्या करता है कि जो अनवांटेड सब्सक्रिप्शन होते हैं या फिर जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उनको क्लीन कर देता है, जिससे हमारा कोई भी प्रोमिसेस या फिर कुछ भी हो वो उधर ही एंड हो जाता है। और ये हम तब करते हैं जब हम उस कंपोनेंट को लीव करके जाते हैं। तो उस समय पर यदि हम क्लीनअप फंक्शन डालते हैं तो हमारा यूज इफेक्ट उस समय पर सब कुछ फ्री कर देता है उस पेज का। सो अगेन आज का जो भी हमने पढ़ा है यूज इफेक्ट क्या करता है। यूज इफेक्ट एक बेसिकली रिएक्ट का हुक है जो कि दो आर्गुमेंट लेता है। वन इज ए कॉलबैक फंक्शन, अनदर वन इज ए डिपेंडेंसी है। सो कॉलबैक फंक्शन में क्या करते हैं, हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, कुछ भी स्टेट को अपडेट करना होता है वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड देन उसी में हम क्लीनअप फंक्शन भी लिखते हैं जो कि एक फंक्शन को रिटर्न कर देता है। एंड डिपेंडेंसी अरे में क्या होता है कि यदि हमको चाहिए कि ये क्लीनअप ये हमारा जो इफेक्ट है इसके अंदर जो भी एपीआई कॉल हमने जो भी किया है वो कुछ टाइम जब किसी वैल्यू का अपडेट होने पर चले। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में डेटा है, यदि मैं चाहता हूँ वो लिस्ट है डेटा है और यूज इफेक्ट क्या कर रहा है उस डेटा को डेटाबेस से गेट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब भी किसी भी डेटा में मैं अपडेट करूँ तो अगेन अपडेटेड लिस्ट आनी चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट अपडेट का जो भी है उसको एक बना लेंगे कि जब भी हम उसको स्टेट को अपडेट करेंगे तो इसको ऐसा स्टेट को हम अपडेट कर देंगे। ओके, एंड जब भी अपडेट होगी तो हमारा फेच डेटा अगेन कॉल हो जाएगा और हमको नया अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, एंड इफ यू वांट टू पास more dependency, so you can pass that dependency as well from here state 1 state 2 like this by separated by this comma. Okay, and everything what